Hola, hola, ¿cómo estás? Let me let me let me tell you a joke before I start. Yeah, I came up with this joke when I was in college. Okay, it's just gonna take a few seconds. Okay, so let me tell you the joke. All right. So मैं this is a coding joke by the way. Okay. So I was trying to solve a problem और मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था और वो हो नहीं रहा था. So I was trying to use if else, I was trying to use switch case और बहुत देर से ट्राई कर रहा था हो नहीं रहा था. ठीक है. So after some time what I did was I मैंने मैंने लूप यूज़ किया और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. So I guess you can say it took me a while. Moving on to the to the question. ठीक है. Minimize sum. This is a good question. This is a really good question. You can see कि मैंने पहली बार इसको सबमिट किया था. ओके, साढ़े छः बज के 20 मिनट में नहीं किया था मैंने. आई थिंक 9 बजे, 9 बजे के आसपास मैंने किया था. ये आई डोंट नो, ये आई थिंक उनका टाइम है. एंड फिर इट वाज रॉन्ग. एंड आफ्टर आई थिंक 1 आवर खाना खा के फिर मैं आया, फिर मैंने ट्राई किया, फिर आई वाज एबल टू सबमिट दिस. So the question is, let me read the question again. Blah 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 blah. Okay, okay, okay. कोई बात नहीं. I shall discuss it. So as usual, जैसा कि ABC में होता है, you have n and you have an array A. A1, A2, A3, A4, blah 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 blah, AN. ठीक है. So what they're saying is that you have to output यहाँ तक का मिनिमम वैल्यू, फिर प्लस यहाँ तक का मिनिमम वैल्यू, प्लस यहाँ तक का मिनिमम वैल्यू, प्लस यहाँ तक का मिनिमम वैल्यू, ऑल द वे टिल द एंड. ठीक है. एंड उनका सम करना है. सम ऑल दैट. ठीक है. min up till 1, min up till 2, blah 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 blah, up till min up till n, and then literally sum it all. ठीक है. Got it. So what you can do is you are allowed to perform one operation, which is take any two I comma j, not the same, take any two I comma j, और जो a of I है and a of j है, a of I should become equal to a of I plus a of j, and a of j becomes 0. So this means that after a of j या फिर a of j से लेके पूरा a of n तक मिनिमम तो गारंटीड है कि वो 0 होगा. But it might be possible that a of I तक का मिनिमम का सम बहुत बढ़ जाए, because a of I अगर at that point एक मिनिमम वैल्यू है, तो this might affect that. So you have something that increases the minimum, you have something that decreases the minimum. So now you have to find out कौन से correct pairs को मैं करूँ, and that's confusing, and that's the question. ठीक है. So let's talk about the brute force approach. You know, let us just do that. Let us see that. Let's not see, let's just talk about it. That so basically अगर तुम सारे के सारे I, J वाले pairs देख लेते हो, that would of course give you the answer, but that's an n square, और n square हम afford नहीं कर सकते हैं. But I think this is in essential to the question, because फिर अपन usually, most of the answers are just optimizations on n square. अगर n into n नहीं कर सकते, so it's probably n into, और n करके हमें जो मिल रहा था, that instead of that we use some kind of, I don't know, prefix sum or suffix sum, and then it's basically just n. That's what happens usually. But इसमें क्या हो रहा है, इसमें you have, okay, so let me tell you something. ठीक है. Base answer without operations. OP means operations. And
सिंस हम एक बार परफॉर्म कर सकते हैं, सो लेट्स कंसिडर द एरे a1 a2 a3 ला 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 an, एंड हम देख ओके सो इसको तो जे नहीं ले सकते बिकॉज इसके पीछे कोई एलिमेंट्स नहीं, तो यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे हम जो, ठीक है, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू 3, ब्ला 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 ब्ला, और 2 के लिए हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट सूटेबल मैच है जे के लिए इससे पहले, जिसके साथ हम पेयर बना के वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू, एंड देन ए ऑफ 3 के साथ हम ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा परफेक्ट मैच है, फिर ए ऑफ 4 के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा परफेक्ट मैच है, एंड यू नो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आप तुम बोलोगे ओ स्टैंडर्ड है तो मेरे से बना क्यों नहीं, बिकॉज इट्स आई डोंट नो क्यों नहीं बना, ठीक है, आई एम जस्ट गोना डिस्कस इट राइट नाउ। कहाँ पे था मैं? um, I was saying I was हाँ, सारे सारे हम करेक्ट वो देखेंगे, ठीक है, करेक्ट क्या बोलते हैं उसको, मेट मेट मैच, राइट। So now there are a couple of cases, ठीक है, let's say case 1 and case 2, ठीक है। Now case 2 is basically, how did I come up with these cases? You just once you really get into the flow of the question, you are going to come up with cases, ठीक है। case 1 is that इसके पहले का जो पार्ट है, like suppose I am at j equals to 5, ठीक है, let's say j equals to 5, एंड तो j equals to 4 तक, यहाँ तक जो सब एरिया है 1 से लेके j equals to 4 तक, that is not in descending order, ठीक है, not, I'm not saying ascending order, just not in descending order, ठीक है। So it's not like it's something like 5 and then 3 and then 4 and then 2, and then can values be repeated? It should be, yep, values can be repeated, 2 and 1 2 3 4 5, okay, now we have 6, ठीक है। So this is not exactly in descending order, 5 से 3 घटा, फिर 3 से 4 बढ़ा, फिर 4 से 2 घटा। So my point is that अगर ऐसा है, so this means that वैल्यू ऐसे ऐसे जा रही है, या फिर वैल्यू अगर ऐसे एट एनी पॉइंट अगर वैल्यू ऐसे हो रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, सो जहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, इसको मैं एक वैलिड पेयर ले सकता हूँ ना, बिकॉज इसको अगर मैंने एक वैलिड पेयर ले लिया, लेट्स से मैंने 4 को एक वैलिड पेयर वैलिड आई ले लिया 6 के लिए, सो मैं इसको कितना भी बढ़ा लूँ इट्स नॉट गोना मैटर, बिकॉज इससे पहले एक छोटा सा एलिमेंट आया था, सो एट दिस पॉइंट मिनिमम वैसे भी 4 नहीं होना था, मिनिमम वैसे भी 3 होना था, तो 4 को बढ़ा दो, मिनिमम इज स्टिल 3, सो जो पूरा ओवरऑल सम है, जो आंसर जो हमें आंसर में निकालना है, दैट्स नॉट गोना गेट अफेक्टेड। सो जो घटना था वो तो घट गया, बिकॉज यहाँ से सब जीरो हो गया ना, बट जो बढ़ना था वो बढ़ा नहीं, सो दिस इज अ गुड थिंग। लेट्स डू दिस फॉर ऑल द जेज फ्रॉम 2 से लेके n तक। बट नाउ कम्स द सेकंड केस कि व्हाट इफ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, एंड दिस इज द केस जो मुझे बाद में जाके आई वाज एबल टू सॉल्व, and I was able to solve only because I wrote it down. So writing down is a really good way to solve questions, at least for me, and at least if you're a kind of person who's me. So the case if it is descending order, let's talk about that. J equals to 5 and we have a1 a2 because I like to give me a moment, something has just come up. Okay, back to where we left off. अगर descending order में है, and I'm going to take a general case, a4 a5, this is the thing, and so a of I is greater than a of 2 is greater than a of 3. Now notice equal to नहीं, like I'm talking about strictly decreasing, because equal to भी अगर हुआ, so I can just increase this and it's not going to matter because we have this, you know. So
if n is greater than a of 4. Actually, but this might even be less than equal to it's. This is all that matters. Okay. So 1, 2, 3. This is it. No. I'm sorry. Sorry. Greater than equal to 4 and फिर a of 5. So this might be less than equal to does not matter. बस ये सब array matter करता है. And क्यों matter करता है? Because let's say मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया था. मैं करूँगा अभी मैथमेटिकली प्रूव. गिव मी 1 second. um मुझे एक बार सोल्यूशन देख लेना, मुझे याद आ जाएगा. और तुमने तो सोल्यूशन किया था, तुम्हें याद क्यों नहीं? जस्ट जस्ट देखने दो यार. हाँ. Oh, minimum difference. Oh, got it. So what it's saying is, let's say मैं इसको bars में represent करता हूँ because usually मैं ऐसे bars में represent करता हूँ. A of 1 is this, A of 2 is this, A of 3 might be this, A of 4 is this. ठीक है? So this is their level. Or this A of 5 doesn't matter. A of 5 क्या? ठीक है? This is the decreasing order. Now what we're gonna look at is, because since okay, so अपन क्या कर रहे हैं? अपन यहाँ से कोई ये वैल्यू लेके, ठीक है, वी गोना ऐड इट अप समवेयर हियर, ठीक है, इन वन ऑफ दीज. नाउ लेट्स से अगर लेट्स से दिस इज द टू एडजेसेंट, दिस इज गोना बी I, दिस इज गोना बी I minus 1, ठीक है. सो इफ अपन यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स से ऐड करके इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक है. सो व्हाट इट्स डूइंग इज ये पूरा का पूरा A of j ऐड कर ले रहा है and that's getting added to the sum. But what if it's something like this, A of like this I minus 1 and this is I, ठीक है. So जो difference है, ठीक है, this is going to be I after I add A of j, but this part doesn't matter. यहाँ पे minimum ये था because decreasing order में, sorry descending order में, हाँ strictly decreasing, and यहाँ पे भी minimum इतना ही रहेगा. So इतना जो part है वो waste चलेगा, and that is what we need to do. हम चाहते हैं कि A of j वेस्ट जाए ताकि वैल्यू कम हो जाए. सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी डिफरेंस मिनिमम वैल्यू है, एंड दैट्स अबाउट इट. एंड हर j पे तुम देखो, अगर यहाँ तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जो कि तुम यू कैन काउंट कितने सारे पेयर है जहाँ पे A of I इज लेस देन A of I minus 1, एंड अगर सारे डिक्रीजिंग है तो यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, मिनिमम डिफरेंस पता कर लो, एंड अगर नहीं है तो जस्ट prefix suffix से you figure it out. It's I think इतना मैंने बोल दिया काफी है. I hope so, because it makes sense, at this point it makes sense. Yep. And C was an easy question. Maybe not, maybe yes, but I think it was an easy question. Or it was a GCD question, और I felt a little happy कि मैंने GCD question जो contest में आया पहली बार नहीं, one of the few times मैंने बना लिया, because GCD questions में मैं पहले फंसता था. और it's okay. So जब divides लिखा है, फैक्टर्स के बारे में बात करी गई है, it's usually GCD question, but मैंने ये सॉल्व करने के बाद सोचा. And that's about it. Thank you very much. Thank you very much. मैं बहुत जल्दी बोल रहा था, अब मैंने आराम से बोला.